Hello, welcome guys to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. Today we are going to continue the science chapter which is magnetic effects of electric current. So in this chapter we are going to start with the topic force on a current carrying conductor in a magnetic field. So if we have magnetic field and electricity, we can produce a force. Means force, electricity and magnetic field are interconnected. If we have any two of the three, we can produce the third one. So this we will understand with the help of an example. This is an arrangement, north magnetic field, north and south, both poles are magnetic bar has been kept on the both ends. This is a circuit in which the focus will be the wire connected with A and B. It is a straight wire, current carrying conductor. If we switch on the key and we start the battery flow, we find that the current will flow in the anti-clockwise direction. In the anti-clockwise direction, as and when we have the magnetic field which is flowing from north to south and current is from A to B towards downwards, then this circuit will experience a force. A force will be generated, and this will be fed by the displacement of the wire from its position to the new position, which is shared by the dots. Now this is what the force on a current carrying conductor in magnetic field is all about. Now here an important question arises: how the direction of the force is decided? So to answer that question, there is a Fleming's left hand rule. What this rule suggests, we will see with the help of this example. Left hand rule is like that. If we have electricity and magnetic field, then we can have the direction of the force. Any two of the three is there, and we can find the direction of the third one. I will try to explain you here with the help of this example. See, you can consider that my first finger is pointing towards the magnetic field. The middle finger is pointing towards the direction of the electricity or current. Now the third, this is the direction of the force. So the direction of force will be outwards. So this is all about this. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, except when it is placed parallel to the magnetic field. To find the direction of the force, it uses Fleming's left hand. Next topic is domestic electric circuits. The circuit connection which we are using in our household devices. Let's understand that. So this is a typical diagram or flow chart of our connection in our house. So as you can see, we have a live wire, neutral wire and earth wire. Three types of wire are present. This is the electric fuse which you can say one or three types of fuse which are connected at the entry of our house. Next is the electricity meter, which in everybody's house we can see. There is a distribution box which is generally present to distribute how the electricity goes to the appliances, and these are the appliances which are each having 220 volts. Now interesting points which we can observe from this connection is, first we have three types of wire: earth, live and neutral wire. We'll study about that. The voltage which is supplying to our house is 220 volts, right? There are specific arrangement which we can see it. The connection which we can observe here into the appliances, the electricity coming is around 220 in parallel combination, which it is not in series combination, right? So we will study all these things, why it is so, why not series combination is used and why parallel combination is used instead of series combination. Let's go one by one.
For live wire there is specific color, green color, which is as a symbolic and standard which is used. Means anywhere, even household wiring, green color is used, it means it is a live wire. It has positive phase. Neutral wire, symbolic color is black and it has negative phase. Earth wire is green color and it has no phase. Next is, in a domestic electric circuit we use parallel combination. Now, what are the advantages of the parallel combination which we have studied in the electricity chapter? In parallel combination, the voltage remains the same, and that is one of the most important points why the parallel combination is used in our day-to-day household appliances. हमारे पास 220 वोल्ट का फिक्स है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस से आती है सब घरों में. सो हमारे पास वोल्टेज इज सेम. सपोज इफ़ वी डोंट यूज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वी यूज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास सपोज़ एक अप्लायंसेस ने, अगर फ्रिज ने अगर 220 वोल्ट या 180 वोल्ट 150 वोल्ट यूज़ कर दिया, तो बचा कितना? 70 वोल्ट. 70 वोल्ट में अगर आपने फ़ैन चला लिया, एसी चला लिया, एसी चलेगा ही नहीं. सो व्हाट वी विल डू, वी आर एबल टू यूज़, इफ़ वी यूज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो हम सिर्फ 2 या 3 अप्लायंसेस चला सकते हैं. बट जबकि हम हमारे हाउस में तो n नंबर ऑफ अप्लायंसेस चलाते हैं. सो इन दैट केस वी यूज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड अगेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो हर अप्लायंसेस को 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होता है. नाउ इट इज़ अप टू द अप्लायंसेस कि वो कितना यूज़ करता है उसको. सो इट इज़ अ वेरी बेसिक आइडिया टू यूज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट इन आवर हाउसहोल्ड अप्लायंसेस. Next is short circuiting. This is a very common phenomena which occurs in our day-to-day households circuits. Why? What it is? It occurs when the end of a circuit are connected by a conductor for a very low resistance as compared to that of the circuit. There एक सर्किट का एक रेजिस्टेंस हो, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है. इन सिंपल वर्ड्स, जो हमारा हाउस होल्ड की बात करें, it occurs when live wire neutral wire comes in the direct contact with each other. Live wire and neutral wire अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएंगे. इन शॉर्ट, रेड एंड ब्लैक वायर. देयर आर 2 reasons why this happens. First, a damage to the insulation of the power lines. जो कॉपर की वायर्स होती है उसमें जो इंसुलेशन होता है जो कि कलर बनाता है, कलर कोडेड होता है, उसमें अगर डैमेज हो. सेकेंड, अ फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच करंट डज नॉट पास थ्रू. अगर जो कंडक्टर है उसमें अप्लायंसेस है उसमें ही अगर फॉल्ट हो. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज़. दिस इज़ एन, इन करंट टाइम्स वी डोंट यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. ये पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इन टुडेज़ वर्ल्ड वी आर यूजिंग MCB in our house. So what is electric fuse? A device which is used in series to limit the current in an electric circuit so that it easily melts in due to overheating when excessive current pass through. So होता क्या है इसमें कि suppose in a rainy season in our house and excessive electricity comes in our household appliance. So what it will do? It will damage our household appliances. Let me take an example. अगर हमारे घर में excessive electricity आ गई due to any reason, it may not be rainy season हो, ज़रूरी नहीं है, समर, गर्मी, सर्दी, कहीं कभी भी आ जाए. अगर सपोज़ करो ड्यू टू एनी रीज़न द इलेक्ट्रिसिटी का जो एम्पियर है वो ज़्यादा एम्पियर से आ जाए और हमारे अप्लाइंसेस से डायरेक्ट पहुंच जाए, तो अप्लाइंसेस तो उस एम्पियर पे वर्क करने के लिए नहीं है, तो वो क्या होंगे? वो डैमेज हो जाएंगे. सो डैमेज अप्लाइंसेस की एक कॉस्ट होती है. तो टू प्रिवेंट टू डैमेज द अप्लाइंसेस वी यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आई वो बीच में खड़ा रहता है. इसमें वायर होता है, लाइव वायर से वायर आया, एक वायर कनेक्टेड होता है और वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. जैसे ही इस वायर अप्लाइंसेस से मेल्टिंग पॉइंट इसका फ्यूज़ वायर का कम होता है. अगर वो जैसे ही हाई इलेक्ट्रिसिटी आई, ये वायर क्योंकि अपना एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, वो मेल्ट हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा.
ब्रेक होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे अप्लाइंसेस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी नहीं। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव, अप्लाइंसेस हमारा सेव हो जाएंगे, अप्लाइंसेस को कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।